हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जॉन कीट्स की पोएम ओड टू नाइटिंगेल पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी पोएम्स अपने चैनल पर कवर करी हैं और भी वेरियस लिटरेचर के टॉपिक्स कवर करे हैं और आगे भी आई ट्राई टू कवर देम एज मच एज पॉसिबल। And this channel not only covers the syllabus of the competitive exam, but all the syllabus of BA Honours, MA English, literature in general. So go through the channel, watch other videos, and don't forget to like the video, subscribe the channel, and share it with your friends. So without any further delay, let's begin the poem. Ode to a Nightingale. Ode to a Nightingale समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जॉन कीट्स के बारे में समझें। जॉन कीट्स पर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 25 और इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ डिजीज which caused the death of his brother, which caused the death of his mother. And somewhere he knew that this disease is going to take his life as well. क्योंकि कुछ मे बी 20-21 की एज से उन्हें कंजम्पशन या ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स देखने शुरू हो गए थे एंड ही यूज्ड टू हैव कफ एंड एवरीथिंग, सो ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई सून, क्योंकि फैमिली एक्सपीरियंस था एंड उस टाइम पे इतनी मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई थी। तो ओड टू नाइटिंगेल में बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की थीम है। समवेयर एक यू कैन रिलेट इट टू डेथ, यू कैन रिलेट इट टू लाइफ। तो जॉन कीट्स की ये पोएम 1819 में लिखी गई थी एंड 1819 में ही पब्लिश हुई थी एंड इट वाज रिटन इन, इट इज सेड दैट इट वाज रिटन इन वन डे इन द गार्डन ऑफ द स्पेनियर्ड इन हैम्पस्टेड, लंदन। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि इनके एक बहुत करीबी दोस्त थे, चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, जिनके ये घर पर थे और उनके घर पर सामने एक प्लम ट्री लगा था और इस प्लम ट्री में जो है एक नाइटिंगेल इनको दिखती है एंड देन ही कंपोजेस दिस होल पोएम एंड कम्स बैक and after several hours, and he has written this poem. Ode to Nightingale was first published in the Annals of Fine Arts. It's a personal poem. It has concepts of negative capability. Negative capability के बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है, which I will again link in the description box. Theme of nature, transience and mortality है. Nightingale lives through the song. Nightingale जो है अपने song के थ्रू इमॉर्टल लाइफ जी सकती है एंड वेयर एज ह्यूमन्स आर मॉर्टल। तो ये मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी शार्पली इस पोएम में दिखाया गया है एंड नाउ यू कैन रिलेट दैट वाई Keats is writing about immortality, because somewhere Keats know that he won't live for a longer time. And 25 years of age is a very young age to see death approaching. So without any further delay, let's begin the first stanza. Ode to a Nightingale by John Keats. My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk. So the very first words of the poem are, my heart aches, that he is not in a happy state. His heart is aching. He is in a very painful state. And what happens? And a drowsy numbness pains my sense. And there is a drowsy numbness. Numbness क्या होता है? When you lose all your senses. जब आपका कोई सेंस काम नहीं कर रहा है, आप एकदम नम फील कर रहे हो। बेसिकली नमनेस क्या होता है? सुन फील करना। तो वो कह रहा है कि मेरी सारी नमनेस, मेरा सारा पेन जो है सुन हो गया है, मेरी पूरी बॉडी सुन हो गई है, मेरे सेंसेस जो है नम हो गए हैं। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। नाउ हेमलॉक क्या है? हेमलॉक का रेफरेंस इस पोएम में बहुत सारे रेफरेंसेज हैं और हेमलॉक का रेफरेंस कहाँ से आता है? सॉक्रेट्स को पॉइजन दिया गया था, जो सॉक्रेट्स को जो ड्रिंक पिलाई गई थी, दैट वॉज hemlock. What John Keats is feeling like, he is feeling that he has drunk hemlock, or he has emptied some dull opiate to the drains, that or he has been given opium. Opiate is kind of a drug. It is an intoxicant. So he's feeling like he has
taken opiate, he has drunk hemlock, he's not in his senses. He doesn't feel conscious in his senses. 1 minute passed and Leith wards had sunk. It is not through envy of thy happy lot. 1 minute passed and Leith wards had sunk. That, if 1 minute has passed and it is as if I am into the river of, what is Leith? Leith is the river of forgetfulness. ये Greek mythology का reference है. Leith is the river of forgetfulness, and he says that it seems that I am in the river of forgetfulness. I am in Leith. Now he wants to forget all his memories. Why is this coming in this line? Is because John Keats doesn't want to remember anything, because he has seen death. He has seen so much of sadness, so much of pain, that he doesn't want to recall it, and he just wants to live in the present moment, numb his consciousness, lose all his senses, so that he cannot think of the memories past, so that he cannot think of the death of his mother, death of his brother, and his own approaching death. It is not through envy of thy happy lot, and I'm not feeling all these things because I'm jealous of you. Now he's talking about Nightingale only, right? Of thine happiness, of thy happy lot. तो यहाँ पे thy कौन है? यहाँ पे thy is Nightingale. But being too happy in thine happiness, don't think that I'm jealous of you, Nightingale. I am really very happy in your happiness. Now, what is the scene? The Nightingale is singing in front of him, and now his heart, which was aching, which was feeling so much of pain, is numb. As if this song of the Nightingale has given him some opium, has given him some drug, some hemlock to ease his pain. This song of the Nightingale has transferred him, has put him in the river of Leith, where he forgets all his memories. That thou light-winged dryad of the trees. What does he call the nightingale? He is calling the nightingale dryad of the trees. Dryad क्या होता है? Wood-winged fairy. कि जैसे एक wood की fairy हो, right? It's Nightingale. He's calling Nightingale a fairy of that tree. In some melodious plot of beechen green. So it's a green, melodious plot, and shadows numberless, and there are so many numberless shadows. Singest of summer in full-throated ease. And कौन से weather में? She's singing in the summers. Now there is this contrast that in summers and shadows are never talked about together, right? So it's as if talking about light and darkness together. It is as if he's talking about life altogether, that life has life has darkness, life has light, and life goes on. It is in shades of black and white. It is never full bright or full dark. So in some melodious plot of beech and green and shadows numberless. क्यों? क्योंकि जहाँ पे नाइटिंगेल है, इमेजिन नाइटिंगेल कहाँ पर है? नाइटिंगेल एक पेड़ के अंदर एक कोने में या बीच में कहीं पर है, जहाँ पे सन की थोड़ी सी बस रेज आ रही है, जहाँ पे पूरा डार्कनेस है अंदर, एंड बिकॉज ऑफ लिटिल रेज इट इज फॉर्मिंग शैडोज ऑल्सो. तो लाइफ इज अबाउट लाइट एंड डार्क, लाइफ इज अबाउट सैडनेस एंड हैप्पीनेस. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ Ode to a Nightingale. So we begin the next stanza. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance a provincial song and sunburnt mirth. Now he is asking for a draught of vintage. Draught means to drink. Of vintage. Vintage means wine. Here vintage means wine. So he wants to drink some wine, and it's not a usual wine, but a wine that hath been cooled a long age in deep delved earth, that has been in a long time, that has been cooled for a long duration. In deep delved earth, right, into the warmth of the earth, tasting of flora and the country green, and which taste of the flora of the country, जो कि
उस कंट्री, जिस कंट्री में ये वाइन बनी है, उस कंट्री के सारे फ्लोरा आर द प्लांट्स, द फ्लावर्स, सबकी उसमें सबका टेस्ट हो, सबकी वार्मथ हो. And the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. And if you've seen some videos, तो ये wine कैसे बनते हैं, there are grapes and then there is a whole festivity, पूरा festival type का लगता है, and people are jumping on those grapes with their naked foot and are making wine. So it is all about happiness, it is all about festivities, it is all about togetherness. और यही कुछ चीज़ें जो है कीट्स की लाइफ में नहीं है. So he doesn't want to drink wine for fun. He wants to consume happiness. उसे ऐसा लगता है कि ये वाइन कंज्यूम करके, क्योंकि ये ऐसे डीप डेल्ड अर्थ में उसकी वार्मथ है. जब लोग जो है उसे बना रहे थे, दे वर डांसिंग, दे वर हैप्पी, दे वर सेलिब्रेटिंग, तो उसमें ये सेलिब्रेशंस हैं, उसमें ये हैप्पीनेस है. एंड ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, एंड ही कुड ड्रिंक ऑल दोज हैप्पीनेस in the sip of this wine. So, oh, for a draught of vintage that had been cooled a long age in the deep delved earth. Deep delved earth, beneath the earth, deep into the earth, tasting of flora and the country green, and tasting of all the flowers and the greenery of the country, dance and provincial song, where there was dance, there were songs, and sunburnt mirth, and there was happiness, lot of happiness. So he wants to drink the warmth of the people who produced it. He wants to consume the happiness of the whole festivity. Oh, for a beaker full of warm south, full of true, the blushful hippocrene. And he wants to drink a beaker full of, a jug full of what? Full of the true, the blushful hippocrene. अब hippocrene का क्या reference है? Hippocrene का reference है कि माउंट हेलिकन में एक स्प्रिंग होता था. दिस इज ऑल्सो अगेन कमिंग फ्रॉम द ग्रीक लिटरेचर. एंड माउंट हेलिकन में एक स्प्रिंग निकलता था. उस स्प्रिंग से जो वाटर निकलता था, इट हैज़ बीन सेड दैट दैट वाटर गेव पोइटिक इंस्पिरेशन, कि उससे पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती थी. तो अब कीट्स क्या चाहते हैं? कीट्स चाहते हैं दैट ओ कैन आई गेट अ बीकर फुल ऑफ हिपोक्रीन वाटर so that he can consume the water and he gets the poetic inspiration. So, full of true, the blushful hippocrene with beaded bubbles winking at the brim. Now, look at the visual imagery he is creating. Full of the true, blushful hippocrene with beaded bubbles. तो जब हम कोई भी ड्रिंक ऐसे डालते हैं which contains soda, तो क्या होता है कि जो बबल्स हैं वो पूरे ब्रिंक में, वो पूरे साइड्स में से फॉर्म हो जाता है. तो विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, तो वो जो है बबल्स जो है विंक कर रहे हैं एट द ब्रिम. ब्रिम मतलब पूरे साइड्स पे, उस ग्लास के, उस जग के. एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, एंड व्हेन आई ड्रिंक द माउथ इज स्टेन्ड पर्पल. द वाइन इज सो नेचुरल, द वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स, सो व्हेन ही ड्रिंक्स इट even his tongue becomes purple. That I might drink and leave the world unseen. And he wants to drink it and wants to escape this world. So another reason why he wants to drink the wine is to become unconscious, to leave this world, to leave the reality of this world, which is very dark for Keats. He wants to forget. He wants to forget that he is going to die. He wants to forget that he has seen so much sadness in his life. And wish thee fade away into the forest dim. And I wish that I drink this wine and with thee fade away. And with you, Nightingale, I want to fade away into the forest dim. And I want to fade away into the forest. I myself want to become the nightingale. I myself want to forget that I am a human, and I want to take the form of a nightingale and see the world through your eyes, because for him, this nightingale is the symbol of immortality. He doesn't want to die soon. Nobody wants to die at the age of 25. But he knows that he's going to die. So he wants to escape this feeling. He wants to escape this thought. And he wants to live through the nightingale. And it is not possible consciously. Therefore, he wants the water of hippocrene. He wants the wine. Now we come to the third stanza, fade far away. And he continues,
from the second stanza, and with thee fade away into the forest dim, fade far away. And I want to fade very far away from this life. Dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known. And I want to become the nightingale. I want to forget what thou amongst the leaves have never known. What you who live among the leaves have never known. What the nightingale has not known, the nightingale has not known death. The nightingale has not known sadness. Right? So it is not, it is not a real bird scenario. Nightingale जो है एक figment of imagination बन जाता है. तो हम ये नहीं सोच सकते कि नाइटिंगल्स जो होते हैं या एक कोई स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ बर्ड है वो इमॉर्टल है, नहीं. पर कीट्स की इस पोएम में नाइटिंगेल एक बर्ड से ज़्यादा एक सिंबल है. किस चीज़ का? इमॉर्टैलिटी का. एक सिंबल है हैप्पीनेस का, फॉर एवर इटर्नल हैप्पीनेस का. तो कीट्स कहते हैं कि मुझे इस ह्यूमैनिटी से, मुझे इंसानियत से, मुझे इंसान बनने से कहीं दूर चले जाना है. मुझे इंसान रहना ही नहीं है. और मुझे क्या बन जाना है? मुझे उस नाइटिंगेल के पर्सपेक्टिव को देखना है. मुझे एक नाइटिंगेल जैसा बनना है जिसने कभी ये सब चीज़ें उन लीव्स के सराउंड बैठे हुए नहीं देखी है. नाइटिंगेल वर्ल्ड्स डजंट हैव दीज फॉलोइंग नेगेटिविटीज़. अब क्या क्या चीज़ें नहीं पता है नाइटिंगेल को, क्या क्या चीज़ें नाइटिंगेल ने नहीं देखी हैं. नाइटिंगेल हैज़ नॉट सीन द वेरीनेस. वेरीनेस मतलब टायर्डनेस, द फीवर and the fret. Here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. So all third stanza में basically he is talking about the atrocities of being human. थर्ड स्टैंजा में क्या बात कर रहे हैं कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं ह्यूमंस में. एंड ही सेइंग दैट ह्यूमंस आर वेरी क्रीचर्स. वेरीनेस मतलब टायर्डनेस. फीवर है, उधर फ्रेट है, फ्रेट टेंशंस है. Here where men sit and hear each other groan, and here the men सिट विद ईच अदर. यहाँ पे क्या होता है कि आदमी आदमी के साथ बैठता है और वो क्या करता है? वो ग्रोन करता है. ग्रोन मतलब कंप्लेन करता है. द ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. वेयर पॉलिसी शेक्स अ फ्यू, वेयर द ओल्ड एज, वेयर डिजीजेस शेक्स फ्यू, सैड लास्ट ग्रे हेयर्स. राइट? सो देयर इज ओल्ड एज. अब ये क्या है? ओल्ड एज में जाना भी क्या है? इट इज़ मॉर्टैलिटी. कि ह्यूमन बींग्स मॉर्टल बींग्स हैं. दे ग्रो ओल्ड, दे कैच डिजीजेस, दे बिकम टायर्ड, दे बिकम इल. But where youth grows pale and spectre thin and dies, and even the youth get the diseases. Now he is referring to his own self or his brother who died at a young age. ही सेइंग कि यहाँ पे तो यूथ भी जो है ही ग्रोज पेल मतलब येलो, इल. एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज एंड बिकम थिन एंड ही डाइज. वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, एंड इवन द थॉट is full of sorrow. Every thought is full of sorrow. There is no happiness. There is only sadness. सब दुखी हैं यहाँ. And leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes. Even the beauty has its lustrous eyes. It is all about lust. It is not about love. It is all about sensual love. It is all about materialistic love. Or new love pine at them beyond tomorrow. And where the lovers will lose their, where lovers will lose their love. It is not an immortal love. It is not an eternal love. Because he's also afraid that his love might lose him quite quickly. So what does he want to do? He wants to escape all these emotions of being human. And we come to the fourth stanza where he wants to escape all these things. Away, away, for I will fly to thee. He wants to escape all these human atrocities. He wants to run away. ये सब छोड़ छाड़ के from the pain of being human. He wants to run away. I will fly to thee. और thee कौन है यहाँ? नाइटिंगेल. कि मैं जो हूँ नाइटिंगेल के पास चला जाना चाहता हूँ.
not charioted by Bacchus and his parts. Now, Bacchus again is a Greek reference. और Bacchus कौन थे? Bacchus को Dionysius भी कहा जाता है, and he was the god of wine. तो वो कहता है कि अब मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए. I don't want to escape this emotion by drinking alcohol, by consuming alcohol. So not charioted by Bacchus and his parts. तो Bacchus कौन है? Dionysius, Greek god, god of wine. और हिज पार्ट्स कौन है? जो उनकी चैरियट थी वो लेपर्ड्स चलाते थे. तो आई डोंट वॉन्ट टू बी चैरियटेड, आई डोंट वॉन्ट टू बी टेकन अवे बाय अल्कोहल, आई डोंट वॉन्ट टू बी टेकन अवे बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, but on the viewless wings of poesy. But instead of drinking, I want to imagine. I want to become creative. I want to escape this I want to escape these human emotions through my power of imagination, through the power of poetry. Though the dull brain perplexes and retards, though the brain has become dull and it is resisting, but I am successful and I am already with thee. So he says already with thee, that he's already now sitting with the nightingale. Tender is the night and happily the queen moon is on her throne. And what is happening? Tender is the night, it is very silent, and the moon is sitting on its throne. And the moon is there, obviously, it is the indication that now it is the night. Clustered around by all her starry face, and the moon, the queen moon is clustered मतलब एक घिरा हुआ है. तो किससे घिरा हुआ है? बहुत सारे स्टार्स से घिरा हुआ है मून. सो द क्वीन मून जो है अपनी थ्रोन पर बैठी हैं और उनके आस पास कितने सारे सितारे हैं, राइट? सो दिस इज द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ दीज लाइन्स. एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज आर फेरीज. बट हेयर देयर इज नो लाइट. Say what from heaven is with the breezes blown. So he's saying जहाँ मैं अभी बैठा हूँ नाइटिंगेल के साथ, वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है. There is no light there. क्यों नहीं है लाइट? क्योंकि वो पेड़ों के एकदम बीच में बैठे हैं, है ना? तो वहाँ पे एकदम अंधेरा है. Save from what heaven is with the breeze blown. Save मतलब एक्सेप्ट. लाइट कब आती है? लाइट तब आती है जब ब्रीजेस चलती है. ब्रीजेस चलते हैं तो क्या होता है? पत्ते इधर से उधर होते हैं, और जब एक गैप क्रिएट होता है तो थोड़ी सी लाइट जो है उसके थ्रू अंदर आती है उस पेड़ के अंदर. बिकॉज अब जो है पोएट अपनी बैल्कनी में नहीं बैठे हैं, पोएट उस नाइटिंगेल के साथ उस ट्री के अंदर बैठे हैं, उसके नेस्ट में. थ्रू वेंड्रस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मॉसी वेज. तो अब जो है वेंड्रस मतलब ग्रीन, तो वो ग्रीनरी के बीच से, थ्रू वेंड्रस ग्लूम्स, वो ग्रीन पत्तों के बीच में से थोड़ी सी लाइट आ रही है. और वो कैसे लग रहा है? वाइंडिंग मॉसी वेज, एकदम अलग अलग पैटर्न्स बना रही है वो लाइट, बिकॉज द लाइट इज कमिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल सोर्स. और वो तभी आ रही है जब विंड की वजह से पत्ते इधर से उधर हो रहे हैं. सो आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर टू यू. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs. तो वहाँ पे इतना अंधेरा है कि मैं देख नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हैं, आंखें भी बंद है और अंधेरा है, राइट? सो जब आपकी एक सेंस बंद होती है तो बाकी सारी सेंसेस बहुत अच्छे से काम होती है, राइट? व्हेन वी मेडिटेट, तो मेडिटेशन का क्या होता है कि हम अपनी आंखें बंद करते हैं. तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे बाकी सेंसेस, हमारा टच, हमारे ईयर्स, ये सब ज़्यादा काम करने लगते हैं. तो यही कुछ एक्सपीरियंस कीट्स कर रहे हैं नाइटिंगेल के साथ. आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट. आई कैन नॉट सी कि कौन से फ्लावर्स हैं एट माई फीट. नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस. इंसेंस मतलब स्मेल, एक भीमी सी खुशबू आ रही है. hangs upon the boughs, and the boughs से, branches से एक थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आ रही है. But in embalmed darkness, guess each sweet, wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and fruit tree wild. But in the embalmed darkness, ये जो darkness है वो embalmed है. embalmed मतलब कामिंग है. बाम लगाते हैं ना, बाम लगा के रिलीफ मिलता है, तो उसी से एम्बाम्ड का मतलब आता है कि बहुत ही सूदिंग डार्कनेस है. दिस डार्कनेस इज नॉट सैडनेस, दिस डार्कनेस इज नॉट मेकिंग हिम अफ्रेड,
but this darkness is so soothing to him. Wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and the fruit tree wild, white hawthorn, and the pastoral eglantine. So now he's talking that the summer month has blessed these plants with flowers. तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि अब इस समर सीजन में कौन कौन से फ्लावर्स. नाउ ही इज यूजिंग हिज ऑल्फैक्टरी सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल. हिज आईज आर क्लोज. तो उसको कौन कौन से फ्लावर्स की स्मेल आ रही है. देयर इज दिस वाइट, द ग्रास, द थिकेट एंड फ्रूट ट्री वाइल्ड. इन सबको ब्लेस कर दिया है फ्लावर्स से. अब कौन कौन से फ्लावर्स हैं. वाइट हॉथॉर्न एंड पेस्टरल एग्लेंटाइन, ये सब फ्लावर्स हैं. फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन leaves, and there are violets which are covered up in the leaves. And mid-May's eldest child, the coming musk rose, or mid-May का जो eldest child होता है, musk rose. Musk rose has very strong and beautiful smell, full of dewy wine. The murmurous haunts full of dewy wine. Now this wine, what is this wine for? This wine is the nectar. This nectar is the wine for the flies. The coming musk rose, full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. Murmurous haunt, that the flies are murmuring and they're so excited with so much of smell and nectar, and they're flying here and there on the summer eves. Darkling, I listen, and I am listening to all these. So today, I will stop here. We have completed 4 stanzas of Ode to Nightingale, and to be fair enough with the poem, we should cover it in 2 parts. There are few things which I want you to notice is, first, it is an 8 stanzas poem. 4 we have covered, 4 we are left with, and we have 10 lines in each stanza. अब एक बहुत ही खास बात है इस पोएम में, जो भी लास्ट लाइन है स्टैंजा की वो कुछ इनकम्प्लीट है, और वहीं से दूसरी लाइन और वहीं से पहली लाइन शुरू हो जाती है दूसरे स्टैंजा की. जैसे फर्स्ट स्टैंजा में सिंगेस्ट ऑफ समर एंड फुल थ्रोटेड ईज की फुल थ्रोट, फुल लाउड आवाज में ये गाना गा रही है, ये नाइटिंगेल गाना गा रही है. ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ वाइन. जब आप बहुत कस के बोलते हैं तो आपका गला सूख जाता है, तो एकदम से आपको क्या चाहिए होता है, दैट यू वांट अ सिप ऑफ वाइन टू वेट योर थ्रोट. ठीक है, तो गला एकदम सूख गया है, तो एकदम से क्या चाहिए, कुछ पीने को चाहिए. ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज. फिर हम इस स्टैंजा के लास्ट लाइन देखते हैं, एंड विथ दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, फेड फार अवे. राइट, फेड फार अवे थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, और एंड विथ दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम ये सेकंड स्टैंजा की लास्ट लाइन है. तो फेड अवे, I want to fade far away. तो ये एक कंटिन्यूएशन है, एक स्टैंजा से दूसरा स्टैंजा जुड़ा हुआ है, कोई अलग से एकदम बात नहीं हो जाती है. Then we see the third stanza. Or new love pine at them beyond tomorrow, away away for I will fly to thee. तो beyond tomorrow मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सब टेम्परेरी है, तो इसीलिए I want to fly away away with you Nightingale. And then we come to the third stanza's last line. Through wordless glooms and winding mossy ways, I cannot see what flowers are at my feet. तो यहाँ पे ये जो है डार्कनेस डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत कम लाइट आ रही है, और कम लाइट आने की वजह से क्या हो रहा है, दैट ही कैन नॉट एक्चुअली सी व्हाट फ्लावर्स आर एट हिज फीट. और फिर आ जाते हैं हम फोर्थ स्टैंजा की लास्ट लाइन में. द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, डार्कलिंग आई लिसन. ही इज टेलिंग अबाउट द ऑडिटरी सेंसेस, कि मैं जो हूँ फ्लाइज की आवाज़ सुन रहा हूँ. ठीक है, मर्मरस हॉन्ट्स ऑफ फ्लाइज, डार्कलिंग आई लिसन, इन द डार्क आई एम लिसनिंग. और डार्कलिंग आई लिसन ये फिफ्थ स्टैंजा की फर्स्ट लाइन्स हैं, जहाँ से हम अपना सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. So I hope these 4 stanzas are clear to you. If you have any doubt, you can comment and I'll answer those questions. Do come and watch the second part of the video. I'll be uploading it soon. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.